Hello students, in my last lecture we have talked about the population and we have talked about the unique features of the population, in which we talked about the density of the population, the age structure of the population, and how we define the age of the population in different individuals. And we talked about one of the important question that comes in the net every year in the examination, that how can we determine the population size of immobilized, or we can say sessile animals within a given area. So that was all about the population size. But we know if the individual is reproducing, then there must be increase in the population, or what we call as the population growth. So today we will be discussing about the population growth, that within a population, how does this growth take place. So before we start about the population growth, we must define the population growth, how it can be defined in a most proper way. So if we look into the definition of the population growth, then we come to know that the population growth term refers to the number of individuals in a population that increases or decreases with the time. By this we mean to say that the population is a dynamic feature. We talked about this in our last slide, in our last class also, that there is a dynamics in the population. So the population always tends to increase or decrease. So if we look into the factors which increases the population size, then we are talking about the way which new individuals enter into the population. It can be either by the birth. If the birth rate is higher, the population tends to grow faster. Or if we can say that the simple way is to tell is that if there is birth, new individuals are oftenly added to the population. Or it may be due to the immigration, that is the entering of the individual into a population from outside, that is immigration. When we talk about the death rate, or we talk about the emigration, then we talk about the decrease in the rate of the population, or we talk about decrease in the population size. So these are the two important ways either by which the population can grow or the population can decline. So when we talk about the increase in the population or decrease in the population, we are actually talking about the population dynamics. So now the thing is that if there is a change in the dynamics, then how does this population growth takes place? What is the rate at which the population growth takes place? So I will switch it into हिंदी. हिंदी में बताता हूँ क्योंकि इसको समझ में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और इसको समझने में वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. तो हम यहाँ पे हाइड्रा का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखते हैं एक क्लोज्ड चैम्बर में, जहाँ पे ना तो पॉपुलेशन बाहर से ऐड हो सकता है और ना ही वहां से पॉपुलेशन एग्जिट कर सकता है. तो क्लोज सिस्टम लेने का यही पर्पस है कि वो पॉपुलेशन जो है, अगर हाइड्रा है एक क्लोज चैम्बर में, वो नॉर्मली अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और अपना उसकी बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स ऐड होंगे और जो नॉर्मल डेथ हो रही है वो भी डेथ होगी. तो इसलिए क्लोज चैम्बर लिया है so that there is no interruption by the external immigration और emigration part. अब सपोज करते हैं कि किसी भी टाइम पे इनिशियल पॉपुलेशन साइज क्या है, एन टी, यानी कि एन अगर इनिशियल पॉपुलेशन है और अगर हम रेट की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद टाइम. सो द पॉपुलेशन साइज इज एन टी. बट अगर पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसिंग है तो टाइम के साथ वो चेंज करेगा. तो वो चेंज आखिर करेगा कैसे? हाउ डज दिस पॉपुलेशन चेंज टेक्स प्लेस एंड एट व्हाट रेट? तो सपोज करते हैं कि जो इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में, वो है स्मॉल बी, दैट इज द बर्थ, और नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रा डाइंग पर यूनिट टाइम, उसको हम डिनोट करते हैं डी से, यानी कि डेथ. तो यहाँ पे दो चीज़ है, जो इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम, उसको बी से, और जो मर रहे हैं पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम में, वी आर डिनोटिंग इट विथ स्मॉल डी. नाउ वी विल लुक इनटू द इक्वेशन कि उसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे हमने पर यूनिट टाइम की बात की है.
अब हम देखेंगे कि अब इस पॉपुलेशन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ग्रोथ रेट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने लिया था NT इज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ हाइड्रा एट टाइम t, और हमको कैलकुलेट करना था कि एक टाइम से दूसरे टाइम, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा t से, उसमें कितने हाइड्रा ऐड हुए या कितने हाइड्रा का डेथ हुआ है। तो इनिशियली हमने क्या लिया था, पर यूनिट टाइम में इंडिविजुअल्स जो ऐड हो रहे हैं वो स्मॉल b है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ऐड हो रहे हैं, वन इंडिविजुअल कितना पॉपुलेशन में ऐड कर रहा है वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि एक टाइम में हाइड्रा जो है एक इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में ऐड कर रहा है। अब एक सिंगल हाइड्रा तो होगा नहीं, तो क्या है कि हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल B से, टोटल हाइड्रा का बर्थ पॉपुलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैपिटल B इंटू टी, यानी कि टोटल बर्थ्स पर यूनिट टाइम कितना है। तो इनिशियल जो था B, जो हमने पिछले स्लाइड में बात की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इनिशियल पॉपुलेशन था NT, और जितने टाइम स्पैन में ये पॉपुलेशन ग्रो किया जो कि है डेल्टा टी। सो कैपिटल BT यानी कि टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ बर्ड्स इन हाइड्रा विल बी स्मॉल b into initial population of hydra, that is NT, and the population during which it has grown, that is delta t। तो इस तरह से हम उसके टोटल बर्थ पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में उसके डेथ रेट, डेथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो डाई करते हैं उसको कैसे निकालेंगे। तो देयर में बी मोर देन वन हाइड्रा दैट में बी डाइंग। सो टोटल नंबर निकालने के लिए हम लेंगे कैपिटल DT टाइम पे, एक पर यूनिट टाइम पे जो डेथ होती है टोटल डेथ, दैट इज कैपिटल DT इज इक्वल्स टू स्मॉल d, जो कि डेथ पर यूनिट इंडिविजुअल है पर यूनिट टाइम, वो जो लास्ट स्लाइड में हमने बात की, इनटू इनिशियल पॉपुलेशन इनटू डेल्टा टाइम, जितने टाइम ड्यूरेशन के चेंज में डेथ हो रही है, दैट इज डेल्टा टी। तो दिस इज द two equations by which we calculate total number of the total number of population number of, either it may be birth or death, that is added at time delta t। अब क्या है कि हमें बर्थ रेट मिल गया, डेथ रेट मिल गया, इनिशियल हमारा था NT, तो जो स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेंज हुआ है पॉपुलेशन का उसको हम डिनोट कर सकते हैं n डेल्टा t से। अगर इनिशियल NT कर रहे हैं पर यूनिट टाइम को लेकर के, तो जो चेंज है जो कि डेल्टा t है, तो उसको हम इनिशियल पॉपुलेशन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पर यूनिट टाइम में होगा n इंटू डेल्टा t। तो डेल्टा NT पहला पॉपुलेशन, n डेल्टा t जो चेंज हुआ पॉपुलेशन वो। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन निकालना चाहेंगे तो होगा NT जो इनिशियल पॉपुलेशन है प्लस जो पॉपुलेशन चेंज हुआ यानी कि n इंटू डेल्टा t। तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा n, ब्रैकेट में ले लेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, t प्लस डेल्टा t, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के थर्ड इक्वेशन में मार्क्ड है। तो ये हो जाएगा हमारा द पॉपुलेशन साइज एट नेक्स्ट टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसको इक्वेट करते हैं हम राइट हैंड साइड में, NT जो इनिशियल पॉपुलेशन है, BT कैपिटल BT जो कि हमारा बर्थ नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट हैज been reproduced or that has been added to population at time t, और डेथ रेट को घटा देते हैं। तो क्या होता है, जो राइट हैंड का साइड का इक्वेशन है वो हमारे लेफ्ट हैंड के साइड के इक्वेशन से इक्वेट करते हैं। अब उसके बाद लास्ट जो इसमें इक्वेशन है उसमें हमने कुछ नहीं किया है, उसमें हमने जो थर्ड इक्वेशन के जो हमने लिए हैं कैरेक्टर्स, उसमें हमने ऐड किया है उसके फॉर्मूला को, यानी कि n t प्लस डेल्टा टी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू NT इनिशियल पॉपुलेशन प्लस जो पॉपुलेशन रेट से वो ग्रो कर रहा है और डेथ रेट में जो उसका डेथ हो रहा है। तो सिंपल क्या है, सो इफ यू वांट टू टेक इट वेरी सिंपली, इट इज द बर्थ रेट represented by equation 1, the death rate given by equation 2. Here in the third equation we are equating the total population at initial plus the total population at the changing rate, that is delta t during delta t, that is equals to the initial population NT we have told already plus birth rate minus death rate. Now just we put BT and DT values of BT and DT from first equation and second equation in the third equation. So we get a new equation, that is NT plus NT plus delta t equals to NT plus BNT delta d minus DNT delta t. So just we are doing it a mathematical way,
ये प्रॉपर एक मैथमेटिकल वे है जहां पे हमने इक्वेशंस को बनाया है, जहां पे हमने डेथ रेट बर्थ रेट को इक्वेट किया है और उसके बाद फिर हमने उसको एक्सपैंड कर दिया है इक्वेशन को. And there is nothing new, it's completely a mathematical equation. If you try to understand, just remember the birth and the death, number of births and number of death, and just put it in the equation of number 3, that you will get an expanded equation that you can see at equation 4, the last one, the last equation. So now what we will do is that we will solve this equation, and this is simple binomial simple mathematical equation. So what you can see, जो यहाँ पे दिख रहा है वो है कि एंटी, और ये सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें जो डेल्टा टी है उसको राइट हैंड साइड से हम लोगों ने कॉमन करके बाहर निकाल दिया है और हमने इक्वेशन को सिंपली सॉल्व किया है. सो व्हाट यू कैन सी that when we substitute nt plus to the right side and delta t in the common, so what we have, हमने क्या किया है, now you see the equation, the fourth equation from the last slide. तो ये nt जो है पॉपुलेशन उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके गए हैं, तो यहाँ जो राइट साइड में nt पॉपुलेशन पॉजिटिव में था वो हो गया नेगेटिव, तो इट इज n ब्रैकेट t प्लस डेल्टा टी माइनस nt. और जो इक्वेशन इधर बचा है उसमें हमने राइट हैंड साइड में डेल्टा टी कॉमन ले लिया है. फिर हमने जो लेफ्ट साइड का इक्वेशन है उसको अपने कॉमन डेल्टा टी जो राइट साइड में था उससे डिवाइड किया है, और फाइनली जो हमने इसको मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट किया, देन एट द फाइनल थिंग व्हेन वी सब्स्टिट्यूट एट डेल्टा एंड फॉर, हमने क्या किया कि जो राइट हैंड साइड का इक्वेशन है और जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है उसको हमने शॉर्टन किया है. तो हमने क्या किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है n ब्रैकेट t प्लस डेल्टा टी माइनस एन टी, तो ये क्या है, इसको हमने सीधा सब्स्टिट्यूट किया है डेल्टा n से. तो हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं. अगर हम देखें तो एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस एन टी को अगर हम डेल्टा n से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सीधा इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा वो होगा डेल्टा n divided by delta t equals to b minus d n t. So this is the simple mathematical equation which we have always solved in our class 10th. Just we need to apply our brains. We are just trying to get the factors. We are just moving some factors from the right hand side to the left hand side, and then we form a final equation that is delta n upon delta t equals to b minus d n t. So we will see what these factors initially what these factors actually mean. So we have described every factor. We have substituted delta n with the formula with the nt plus delta t minus nt. We have substituted with delta n. We already have delta t from the equation, b minus d we have talked in the previous slide, and nt is the initial population at time t. So what this equation does mean to us, let's see how we can describe this equation in more exact and more proper way. So if we want to know the population growth rate, so from the last slide, I hope I have not missed any slide. Let me check once. So no, yes. So now if we see that how we can change the equation, so we have seen that in last equation we got delta n upon delta t equals to b minus d into initial population, that is nt. So if we go for a differential change and we think that the population at delta time t the value approaches 0, then we can remodulate this equation as dn upon dt equals to rn. So let us see what dn dt. This is the differential. If we think that at delta time t the time approaches, the value of dn dt approaches 0, is a differential equation which we don't need to solve in this biological
topic, and so I have just taken the equation from the last thing, and we have replaced delta n by delta t with dn dt, and we have substituted b minus d with r. So final equation we have, and since delta we are talking about delta we are talking about the population n, so we have substituted everything here. We have gone for differential equation, and we finally what we get is dn upon dt equals to rn. So this is the way we have been looking right from your 10th class, that this is the model for exponential population growth. So what you have seen always is dn upon dt equals to rn. That is the formula given in most of the book. So how this formula is derived, this is the way in which this formula is derived. So in your MSc class you need to derive this formula. This is the way you can derive it, and you need to understand that how this derivation takes place and how this formula has come into the play for the detection of population growth. So here we are talking about the population growth, and the model is, remember, the model is the exponential population growth. When we talk about exponential, we are talking about 2 to the power n always. So here this is the model for the exponential population growth, and here r, the value of r is b minus d, or we simply called r as intrinsic rate of population growth. So this is the formula, remember it, and remember the model what I am talking about. It is the exponential population growth, because when I will be talking in next slide we will be changing, that will be the logistic population growth, right? So here we are talking about, if someone is asking this formula, this dn by dt equals to rn, then he is talking or she is talking about the exponential population growth, right? So next we should move to the next slide, and when we look into the next slide, what we have here is how this population exponentially grows, and how the value of r tends to increase or decrease the population growth rate. So if r is greater than 1, if r is greater than 0, that means birth is more, number of birth of individual is more than d. So अगर मानो कि r का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि बर्थ जो है वो ज़्यादा हो रहा है. अगर सिंपल सी बात है, if r is equal to b minus d, so अगर r equals to b minus d, that means if हम सब्स्टिट्यूट करें b की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 होगा 4, यानी कि वैल्यू r की 0 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंडीशन में पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. बट अगर r की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा है, और जब डेथ रेट ज़्यादा होगी इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ r इज क्रूशियल and the value of r is determined by what is the birth number of individuals and the death number of individuals. If birth of individuals within a population is greater than the death rate, r is greater than 0, then the population tends to grow exponentially, and vice versa. If the population death rate is greater than the birth rate, r value is less than 0 and the population declines exponentially. And if birth is equals to the death, so it is well known that if birth is equals to the rate of the number of individuals, then r is 0. That means there will be no population change through the time. So in this graph you are looking at a graph where you are seeing that one line that is yellowish orange, it has been written r is greater than 0. That means here the population tends to grow exponentially, but when r is equals to 0, that means there is no change in the population, and when r is less than 0, that means there is a decline in the population over a specific period of time. So this is also very important for your NET examination, that directly graph is given to you, is provided to you, and then it is asked out of it may be similarly like this way, that with this graph which of the following statement is true or false. So you have to check whether all the statements are true or all the statements are false. So remember that the topic which we discussed last day and the topic which we are discussing today,
it is not only essential for your syllabus but also for your NET examination also. So you can find in some of the papers, previous papers of NET examination, that the value of R is directly asked in the question, that R is great, the graph is presented like this to you, and then you have to apply the population growth rate formula, and then you have to choose that which of the following is true or false. So the applicability of the and the analysis part during the examination is very important, and this basic concept will help you to get through. So this is what we are talking about, the population exponential model of population growth. So I am always talking about the exponential model, that is dn upon dt equals to Rn. This is the exponential model, and on that basis of the model we are describing about the values of R and how the birth rate and death rate takes place, and as a result of the value of R changes, and since the according to value of R, we a graph is plotted. If R is greater than 0, there is increase in the population exponentially. R is less than 0, decline in the population exponentially. If birth is equals to death, then R equals to 0, and there is no addition or there is a decline in the population of the individuals, or there is no change in the population growth rate. So this is all about the population growth rate, and we have talked about the exponential model of the population growth. So going to the next slide, what we see is the we want to predict, suppose, so it is fine that we have calculated the exponential growth rate. So this is over a time delta t, we have taken delta t into consideration. But if we want to know at any specific time, so if we are talking about delta t, then we are talking about the fraction in which time is being taken. From, suppose we are talking from t0 to t1, then we can have fractions of time. There can be different times. So if we want to choose a time and we want to know what is the population size at any time t, so under that condition of exponential growth, we will further uh, differentiate the equation which we have presented earlier, and the final result is that nt equals to n0 e raised to power rt. So nt is the initial population, n naught is the population, nt is the population which we know at any specific time, n naught is the initial population size at time t equals to 0, and e is the base of natural logarithm, and this value is 2.72. And we better know what is r and t. We have talked in the last slide. So exponential growth rate is determined for a delta time t, that it is dn by dt equals to rn. But if we in particular know that in a specific time, within that time, if we choose a time and we want to know what is the population size at that time, then we have to go through this equation to solve the problem. So we will be talking about how to solve a problem in my next class, and so far we have not encountered any numerical problem related to this, but very soon we will be looking into this. And this is what we have, the population growth rate, in which we have talked about how this population tends to grow over a time, and how this population can be predicted for the exponential part. And we have derived a formula which we have studied right from our +2 classes, but we have never know the derivation, how, from where, and how it is derived. So now we know how dn by dt equals to rn is derived. And then the final part which you are seeing right now is that if we want to predict the population size at any time t, then we have to go through this equation to solve the problem, to find out that what is the population size at any time t. So for today, so far we have reached here, and in my next slide, in my next class, I will be talking about the logistic population growth. Today we have talked about the exponential population growth. We have seen that the population is either increasing or declining exponentially, but the major question is till how much time.
So in next class, so we have to find out the logic. A population cannot tend to grow exponentially over time and time and time, because there are some factors which are limiting. So logically, if we think about the population growth, we have to see the logistic model of the population growth. And for today, that is all. Stay at home, stay safe.